तो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय हर्षित। सो गाइस, आज का टॉपिक है अपना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सेक्शन एक्सेल 8.2 का। तो थर्ड क्वेश्चन इज cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री एंड फोर्थ क्वेश्चन इज sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड सॉल्यूशन। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। So we know that the value of cos 45 degree is 1 upon root 2. Value of sec 30 degree is 2 by root 3. And value of cos 30 is 2. So we need to solve this. So first of all, 1 upon root 2 in the, then we need to take LCM root 3, 2 plus 2 root 3. Then reciprocal 1 upon root 2 into root 3 upon 2 plus 2 root 3. Then 1 upon root 2 into root 3 upon 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, then remaining value is 1 plus root 3. So we have 1 upon root 2 into root 3 upon 2 into root 3 plus 1. So we need to rationalize. So for rationalize, 1 by root 2 into root 2 upon root 2 we can do separately. Root 3 upon 2 root 3 plus 1 into root 3 minus 1 upon root 3 minus 1. We need to multiply. So root 2 into 1 root 2, root 2 into root 2 is 2 into root 3 into root 3 minus 1 upon 2 root 3 plus 1 into root 3 minus 1। तो क्या हो जाएगा इसमें, root 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So root 3 into root 6, root 3 is root 6 and root 3 minus 1 in the denominator, 2 into 2 is 4, 3 is root 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। So we have root 18 minus root 6 and in the denominator 4 into 2. So we need to calculate the under root of 18. So how to calculate? So 18, then 18 is divided by 2, so 9, then 3, then 3, so 3 is common, so 3 under root 2 minus root 6 upon 8। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।